Well, hello students. So I'm going to discuss the JEE Advanced 2024 paper, physics paper, and this time I'm going to discuss the mechanics. Okay. So just I would like to say you something about that, about the paper. देखिए ये जो पेपर एडवांस का जो पेपर है इसमें टोटल 17 क्वेश्चंस हैं 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं पेपर वन की बात कर रहा हूँ पर सब्जेक्ट फिजिक्स में आउट ऑफ 17 क्वेश्चन ये मैकेनिक्स की वेटेज की बात करूं तो कितने क्वेश्चंस मैकेनिक्स से आए हैं सिंगल चॉइस वन ऑप्शन करेक्ट थ्री क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर मैकेनिक्स है ऐसे एक क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मिक्स है बट मोस्टली मैं उसको ऐसे मैकेनिक्स ही समझ रहा हूँ दैट आई विल लेट यू नो और फिर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट नहीं है इंटीजर टाइप में टू क्वेश्चंस हैं जिसका कि 4 मार्क्स थी सो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं इंटीजर टाइप में मल्टीपल मैचिंग तो यदि आप देखें तो 5 क्वेश्चंस मैकेनिक्स से आया है पेपर वन में एंड उसकी मार्क्स देखें तो 17 मार्क्स के क्वेश्चंस मैकेनिक्स से आया है आउट ऑफ 60 मार्क्स यदि मैं बोलूं कि क्या उसका वेटेज कितना हो गया मैकेनिक्स का यदि लगभग यदि आप देखें फिजिक्स को मैं इनफैक्ट कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हालांकि इसको भी मैकेनिक्स में आप ले सकते हैं then thermal physics, waves, electrodynamics, that is electrostatics and optics and modern physics. तो 6 या 7 में आप डिवाइड कर सकते हैं तब भी पर पार्ट का ईच पार्ट का जो वेटेज है अराउंड 10% बट 17 मार्क्स आउट ऑफ 60 इज फ्रॉम मैकेनिक्स तो लगभग यदि मैं कैलकुलेट करूं तो कुछ अराउंड 28% से ऊपर मैकेनिक्स पेपर वन में है एंड नो डाउट हम ज़्यादा समय मैकेनिक्स को देते हैं 11th में जब आप होते हैं तो अराउंड 5 to 6 मंथ मैकेनिक्स को देते हैं तो एंड मैकेनिक्स मेजर पोर्शन भी है फिजिक्स का इवन की जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स हैं उसमें भी बहुत सारे बहुत मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं तो मैकेनिक्स बैकबोन की तरह है फिजिक्स का तो आइए हम देखते हैं जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं हमें जरूर मैकेनिक्स अच्छे से भी करना चाहिए क्योंकि मैकेनिक्स का वेटेज काफ़ी अच्छा है जेई एडवांस में और हम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस जो जेई एडवांस के होते हैं उसे हम अच्छा उसमें स्कोर भी कर सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं बहुत ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस जनरली बच्चे सेल्फ स्टडी में या कोचिंग क्लासेस में करते हैं जो डिफिकल्टी लेवल होती है उससे यदि मैं कहूँ पर्सनली तो मुझे लगता है कि उससे पूरा नीचे ही लेवल होता है जेई एडवांस का यदि आप जिस तरह क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे बुक्स करते हैं तो उसके कंपेरिजन में उसके कंपेयर से आप कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चंस बेसिक ही रहता है थोड़ा उससे नीचे ही रहता है और एट पार कह सकते हैं चलिए चूंकि नया होता है तो हम देखते हैं हाउ वी विल सी व्हाट आर द क्वेश्चंस जो आया था इस साल तो क्वेश्चन देखिए ये जो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ओनली वन ऑप्शन करेक्ट ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में जो मैंने अलग अलग किया एक क्वेश्चन तो यूनिट डायमेंशन है अच्छी बात है क्वेश्चन जनरली कभी कभी जेई मेन में तो बहुत ऑब्वियस है यूनिट डायमेंशन बट जेई एडवांस में भी है क्वाइट ऑफन आ जाता है एंड देन सेकेंड क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ ये तो ऐसे दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बट द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन आप समझ लीजिए तो इसे भी मैकेनिक्स में ही ले रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो बहुत ही बेसिक है कूलम्ब्स लॉ है तो लेकिन जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट जहाँ यूटिलाइज हो रही है वो मैकेनिक्स तो मैंने इसको भी मैकेनिक्स ही लिया है एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो फोर्स इज गिवन समथिंग लाइक दैट एंड देन उसकी पोजीशन दी हुई है आपको किसी टाइम में टी इक्वल टू जीरो पोजिशन और दी हुई है आपको किसी टाइम पे इसकी पोजीशन और मोमेंटम निकालना तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये भी एंड आप देख के समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स से किस पार्ट का क्वेश्चन है बट एनीवे वी विल कम टू वन वी विल डिस्कस फॉर ईच क्वेश्चन एंड देन यू नो
एंड इंटीजर टाइप में दो अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक जो है ये रोटेशन पे है, राइट। और मैं कहूँ कि दूसरा क्वेश्चंस जो है वो भी आपका रोटेशन ही है। इम्पल्स के क्वेश्चंस हैं, बट एंगुलर इम्पल्स का क्वेश्चंस है तो रोटेशन ही मान लीजिए, दो क्वेश्चंस रोटेशन से हैं। तो ये क्वेश्चंस है, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो कि जेई एडवांस में 24 पेपर 1 में आया है। चलिए हम वन बाय वन इस क्वेश्चंस को डिस्कस करें। वेल, so let's start with the first questions of that is from unit dimension. इसको करते हैं। Let's see what is the questions. A dimensionless quantity is constructed in terms of electronic charge E, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h, and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as e raised to alpha epsilon naught beta h gamma or c delta and n is a non-zero integer, then alpha beta gamma delta की वैल्यू क्या होगी, इससे मैच करना। वन ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसको एकदम ये डायमेंशन लेस है तो हम समझ ही गए कि क्या करना है। तो जब भी डायमेंशन लेस है तो आप इसको तो डायमेंशन लेस है तो e raised to alpha, epsilon raised to beta and h raised to gamma and c raised to delta, राइट। ये डायमेंशन लेस, इसकी डायमेंशन क्या हम ले सकते हैं, इसकी डायमेंशन हम लेंगे m0, l0, t0 और चूंकि चार्ज है तो हमें करंट लेना होगा। ऑलराइट, नाउ ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो पहले जो फर्स्ट ई है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मैं वन बाय कर लेता हूँ। ई इज इक्वल टू आई इंटू टी लिख देता हूँ मैं ऐसे। फिर एप्सिलॉन नॉट में निकालना है, इसकी डायमेंशन निकालनी है तो मैं इसको लिख लेता हूँ। एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख लीजिए डायमेंशन के वजह से। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाएगी आपको क्यू स्क्वायर, दैट इज आई टी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर और फोर्स नीचे आ जाएगा आपको, तो दैट विल बी एम एल टी माइनस। तो एप्सिलॉन नॉट को यदि आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं एम का पावर -1, राइट। एल का पावर ये और ये मिला दीजिएगा तो 3 -3 एंड टी का पावर -2 और यहाँ पे 2, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, टी का पावर 2 है तो टी का पावर 4 एंड आई का पावर। थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आसान सवाल है, तो डेफिनेटली आपको एच एच की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एच की डायमेंशन आप किसी से रेट कर लीजिए, पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, राइट। एंड सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एच की डायमेंशन हो जाएगा आपका पी इंटू लैम्डा। पी आपको फोर्स इंटू टाइम, एम एल टी -2 इंटू टाइम टी, लैम्डा इज एल, सो एम एल एल स्क्वायर टी माइनस, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस, राइट। तो एच की डायमेंशन हो गई, राइट। तो एंड आपको सी की डायमेंशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो सी तो हमें पता है, सिंपल है, एल टी माइनस, राइट। तो ये चारों हमने लिख लिया, आइए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ई की वैल्यू अल्फा, सो आई टी की वैल्यू आई इंटू टी इसकी पावर अल्फा, देन एम रेज टू माइनस एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा, एम -1 एल -3 T4 I2, this power is beta, and then H is M L square T minus, इसकी power gamma, and fourth one is C to the power delta, that is L T -1 to the power, और this is equal to what, M0 L0 T0, alright। तो आइए रिलेट करते हैं, पहले M ले लेते हैं, M का पावर माइनस बीटा, देन m का पावर क्या हो जाएगा +2 गामा, प्लस इधर नहीं है
एल ले लीजिए, एल का पावर -3 बीटा, एल का पावर +2 गामा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आप कई बार किए होंगे, एल का पावर डेल्टा। एंड देन टी ले लीजिए, टी का पावर अल्फा, टी का पावर 4 बीटा, फिर टी का पावर माइनस गामा एंड टी का पावर माइनस डेल्टा। एंड देन आई ले लीजिए आप, आई का पावर अल्फा, देन आई का पावर आपका 2 बीटा, एंड देन आई इधर नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू m0 l0 t0 i। वेल, सो इसको रिलेट कर देता हूं मैं। तो इफ वी रिलेट दिस थिंग, राइट, तो एक बार चेक कर लेता हूं, राइट। एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, E इज आई इंटू टी, एप्सिलॉन नॉट को हमने आई टी स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर आई टी, राइट, अपॉन एल स्क्वायर एम एल टी -2, राइट। So this will be m, epsilon naught will be m raised to -1, l raised to -3, t raised to -4, +4 and I raised to 2, ठीक है। h is equal to p into lambda, that is m l t -2 into t into l, so m l square t raised to -1, m square t raised to -1, so c is l t -1, so l t -1। तो हमारा इससे जो आ गया आपको, that will be m raised to minus beta plus m raised to, this is not 2 gamma, plus gamma। तो देखिए कैलकुलेशन एक बार चेक आराम से करने की जरूरत है यहाँ। तो दिस विल बी m raised to gamma, राइट। तो एक बार चेक कर लीजिए, m raised to here, m raised to minus beta and m raised to gamma, and then l raised to -3 beta, l raised to +2 gamma, then l raised to delta, this, and then t raised to alpha plus t raised to 4 beta plus t raised to minus gamma and t raised to minus delta, I raised to alpha plus I raised to +2 beta 0, that's fine। now equate कीजिए, so minus beta plus gamma is equal to 0, we got beta is equal to gamma, this is one। and then इसको कीजिए, जो छोटा पार्ट है उसको देखिए। So this will be again what, this is small part, alpha plus 2 beta is 0, right। जो छोटा है उसको हम देखेंगे पहले, उसी से कोशिश करेंगे रिलेट करने का, चार ऑप्शन को मैच कराएंगे, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा। मुझे लगता है कि पहले जो हमें इंफॉर्मेशन मिला इसको देखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा, राइट। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो देखिए अल्फा क्या है, बीटा का डबल है और माइनस है, मतलब अल्फा की वैल्यू जो होगी, बीटा की वैल्यू अल्फा बाई -2 होगी, राइट। और वही वैल्यू गामा की भी होगी, बीटा और गामा क्या है, इक्वल है, और अल्फा का हाफ है और अपोजिट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, वी शुड नॉट यू नो। तो अल्फा का हाफ बीटा है और गामा है, और अपोजिट भी, और बीटा और गामा इक्वल है। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट वन इज 2n -n तो ऑप्शन ए में ये बातें हैं कि ये जो आपका अल्फा है इसका हाफ बीटा है और इसका हाफ गामा है और अपोजिट साइन है। ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया इस हिसाब से, ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया इस हिसाब से, और ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम ये अर्थमेटिक करने के लिए यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इससे क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है, लेट्स गो अहेड। तो क्वेश्चन वन ऑप्शन ए, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया, वी गॉट द ऑप्शन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन, लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू का, सिंगल चॉइस ऑप्शन का। क्या क्वेश्चन है ये, टू बिट्स ईच with charge q and mass m are on a horizontal frictionless non-conducting circular loop of radius r, right।
बहुत सारी बातें लिख दिया, हॉरिजॉन्टल भी है, फ्रिक्शनलेस है, नॉन कंडक्टिंग है और सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस r है। वन वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द लूप एट सम पॉइंट, मतलब एक बीड को फिक्स कर दिया, ठीक है, while the other one performs small oscillations about its equilibrium position along the hoop। तो दूसरा जो बीड है वो ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये दिया है। देन द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस इज गिवन बाय, ये चार ऑप्शंस आपको मैच करना है। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशंस। बिल्कुल आप इसको आसान क्वेश्चन ही समझ सकते हैं क्योंकि इट इज, चलिए पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम। एक हम, चलिए ये हमारा, हमने एक एक बिट लिया, ये बिट को हमने फिक्स कर दिया, तो फिक्स कर दिया, राइट। और दूसरा बिट डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे लिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा जब यहां पे होगा, तो एट दिस पोजीशन द बिट वन, ओके, दिस इज द बिट वन एंड दिस इज द बिट टू, तो इट ये फिक्स है। तो ये जो बिट टू है ये पोजीशन की इक्विलिब्रियम होगी क्योंकि नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा बच्चों, एक तो फोर्स ये चार्ज Q है and this charge is also Q, so one force is the electrostatic force and other is the reaction by the hook, and these two forces will be equal and opposite and इसकी value equilibrium, so this is what the equilibrium position। आइए इस पोजीशन से पूरा हम डिस्प्लेस करते हैं बिड, इस बिड को, लेट मी राइट बिड वन एंड दिस टू बी बिड टू। तो बिट टू को मैं थोड़ा डिस्प्लेस करता हूँ, सम एंगल टेक सम स्मॉल एंगल यहाँ पे ले आए इस बिट को, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, so this is the displacement of the second bit and let this angle is theta। तो मैंने इसको डिस्प्लेस किया। अब लेट अस सी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इसके लिए मैं एक सेंटर भी यहाँ पे, सेंटर ऑफ द सन है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सेकेंड बिट पे, राइट। अब आइए हम जब क्यों ये किया, ये रेडियस r है, वन मोमेंट, तो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, ये भी रेडियस होगा r, ये भी होगा r। यहाँ से जो बिट वन से जो टू पे फोर्स लग रहा होगा, लगेगा अभी, वो कैसा होगा, दिस इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल हैव वन कंपोनेंट along this, right, yes or no, that is line joinings, let this position is p, c to p, so one is this and other component is tangential, right, other component is tangent। All right, so this is the component, so what will be this f tangency, right? Okay, now we know very well if this angle is theta and also this angle is theta, so this angle is also theta, क्योंकि ये r है तो ये भी r है, and this is, so this angle is what, 2 theta, you know this thing, okay। तो अब देखो आप कि व्हाट इज द, यदि हमने इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्प्लेस किया तो हम क्या देख लेते हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपोजिट टू दैट रीस्टोरिंग फोर्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो विच वन इज द रीस्टोरिंग फोर्स, Ft, ठीक है ना, बिकॉज इसमें ये कहा भी है कि स्मॉल ऑसिलेशन about its equilibrium positions along the hoop, right। So what will be Ft, this angle is 2 theta, right, this angle is 2 theta, so this will be what, this will be, this angle is theta, so this one is like this, right, and this angle, what will be this angle, ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से ये पैरेलल है ऐसा, तो ये एंगल आपका क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, राइट। तो दिस एंगल इज थीटा, so this will be what, f cos theta,
यदि आप इसके अबाउट लीजिएगा, इसके अबाउट आप लेते हैं बच्चों, वन मोमेंट, ये जो ये हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया, ये लाइन पैरेलल टू डायमीटर ड्रॉ किया, तो एंड दिस इज व्हाट the line joining center to P, right? And this is this line. So this angle would be the, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, देखिए थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज F, right? This is its component, one component would be along this direction, ये F का, और ये component ये direction, right? So this angle is what is equal to this angle, so theta. So this is what F cos theta, and this will be what F sine. All right, bachcho. So I just made this thing clear. So what would be F tangential? That is equal to what F sine. I hope you got this thing. And what is F tangential? It is equal to what? This is equal to minus MA. I can write is equal to F sine. So why minus I have written, or I can write like this. MA is equal to minus F sine theta, because we have displaced in this direction, and tangential force is this direction, right, opposite to that. So what we can write here, MA is equal to minus F. What is the value of F? F is equal to Coulomb force, that will be 1 by 4 pi epsilon naught q square by the distance. See, this distance, and this distance is almost same, right? These two distances are almost same. This is what 2 are, right? 2 r. So this is also what 2 r. If you want me to say how it is a small, since theta is small, so it will be 2 r only. So this is, I am writing 2 r square. So this will be what q square by 4 pi epsilon naught 4 r square, and sine theta is small, so I can write sine theta is equal to theta. Now let me write this one. I would like to tell you in terms of x. Let's say this is x, small value here. This chord, small chord, one is x. Then I can write, d2x by dt square is equal to minus q square by 4 pi epsilon naught into 4 mr square theta. Alright, let me relate the theta in terms of x. See, from here, this, right, this is r, this is 2 theta. So I can write in this sector that r into 2 theta is equal to x. So I can write theta is equal to x by 2. So let's write here minus q square by 4 into 4, 16 pi epsilon naught m r square. Theta is what? X upon 2r. So this finally equal to minus q square by 32 pi epsilon naught mr square. That is d2x by t. And you know very well that this is the equation of SHM. A is equal to minus omega square x. The value of omega square is what? Q square by 32 pi epsilon naught. It just, it will not take much time, since just I am explaining the things. Otherwise, you can do in proper time, you can solve this question. So this is the option B is correct. Now, see, if you should not, you should know that this is also 2r, as I told you. If you want to give how it will be 2r, I'd like to tell you that you can say like this 1, 2, r 1, 2, this is say r vector,
if I am saying this to be R vector, so this R vector, this I am extra mile something we are doing, right? This is not required, but just I'm telling you. So R vector you can write Ri cap plus this is R. So this will be R cos 2 theta I cap plus R sin 2 theta J cap. Take mod R and then take theta tends to 0. You will get, right? All right, student, you got this question. So this question is based on SHM. I can say it is more the questions of it is of based on SHM than electrostatics. And even the next question is if you see the force is equal to minus 20 x plus 10, so you should guess what this question is. So don't try to solve directly. You have to think before to proceed, because this question is given a block of mass 5 kg moves along x direction subject to the force F is equal to minus 20 x plus 10 Newton with the value of x in meter at time t equal to 0 second. It is at rest at position x is equal to 1 meter. The position and momentum of the block at t equal to pi by 4 seconds are. Friends, you know, if you try to solve these questions by integration and all, it is then not the questions of MCQ. You have to immediately you have to understand force is minus 20x minus x, F proportional minus x plus some constant. And so it is very clear that the motion is SHM. So it is again the second questions from the SHM, right? And secondly, uh, plus something means it is also clear that the mean position is not at x is equal to 0. So these two things you have to carefully you have to understand, and immediately then you can solve the questions, you can crack it. So you can think and you can solve like that. F is given what? F is equal to minus 20x plus 10. So always take a pause and think while to begin the questions. Before that you have to think how these questions, how we have to means this question belong to what exactly. Sometimes the question seems very simple, but it is you have to think. If you directly do these questions by kinematics, no, it will take time. So see, F is equal to this, so this will be what? 5 into A is equal to minus 20x plus 10. So A is what? Minus 4x plus 2. So one thing is very clear to us that let us see what is the mean position. We know that mean position means acceleration is 0 or net force is 0. So I got x is equal to what? Minus 4x 2 by 4, that is 0.5. So I got the mean position is 0.5 meter. All right. And the particle is started from x is equal to 1 at t 0 second and it is at rest. So here three information at time is given 0 second. So and it is at rest and position is 1 meter. So now let us draw this line. This is x is equal to 0, but x is equal to 0.5 is the mean position where the net force is 0, right? Mean position. And it is given that that at t is equal to 0 means it is at rest, means velocity is 0 at x is equal to 1. So particle is started from x is equal to 1. Particle is started from x is equal to 1 and its velocity is 0. It is very useful information. Velocity is 0 means what? Extreme position. It cannot move further, right? So, and if extreme position, one extreme is right side of the mean position, then another extreme will be left side of the mean position. So, what is the distance between mean position to extreme position? 0.5 meter, right? So, it is again this side, it will how much? 0.5. So, we can say this is 0.5 and this will be 0.5. And this is nothing but amplitude then. So, we got the amplitude is 0.5 meter. Second thing, we know that A is equal to what? For SHM, A is equal to minus omega square x plus maybe some constant A naught, that is that is the acceleration
even when x is 0. Means x is 0, there is acceleration. Why this thing? Because x is 0 is not the mean position. This is because x is 0 is not the mean. So that is why the acceleration is there at x is equal to 0, right? All right. So from that we got omega square. From here I got omega square is equal to 4. So omega is 2 radian per second. All right. Now come to see what we have to find. We have to find the position and momentum of the block at t equal to pi by 4 second. So at t is equal to pi by 4 second, we have to find position and we have to find momentum. So definitely we have to write the equation of SHM. So what is the equation of SHM? X is equal to a sine omega t plus delta if it starts from the mean position. But if the mean position is to start from the mean position, and mean position, that is not essential. But it is if the motion is performing SHM and the mean position is at x equal to 0. So we can write what x is equal to a sine omega t plus delta. Particle may start from anywhere. But if the mean position is at x equal to 0, we will write x is equal to a sine omega t plus delta. But if mean position is somewhere else, not x equal to 0, then we have to add the mean position x naught. And here the mean position from the origin is nothing but 0.5. That you know very well. So we can write this is 0.5 plus a is also 0.5 and sine t plus delta is equal to x. And given that at t will be 0, x is 1 and v is 0. So that is sufficient to find delta. So what you do, if you put this thing here, so you can find, if you differentiate it, or velocity is 0, so differentiate it, v is equal to what? 0 plus 0.5 into 2, 1 cos omega t plus delta. So at t is equal to 0, you put this thing, this is 0 and this will be cos 0 plus delta. Then cos delta is 0, so delta would be pi by 2. We also 3 pi by 2, but just I give you the logic that a is equal to what? Given a is equal to given what? Minus 4x plus 2. A is given minus 4x plus 2. So x is equal to 1, a is what? Minus 2 meter per second square. So particle is at the extreme position that I got it, and its acceleration is towards left side. Minus means it is towards the mean position. So this is what? Pi by 2. If it is this side, it is 3 pi by 2. Phase means what? Acceleration is right side, right? So here I will take what? Delta is pi by 2. All right. So let me. All right, students. So I got here x is equal to 0.5 plus 0.5 sine 2t plus pi by 2. That I got. Now we have to find the position at t is equal to pi by 4 seconds. So put this value and find the position. X is equal to 0.5 plus 0.5 sine 2 pi by 4 plus pi by 2. So this is again pi by 2. Sine pi by 2 and plus sine pi by 2 is sine pi, and sine pi is 0. So x is equal to what? 0.5. Because this part is what? Come out with. So this I got this thing. Momentum. For momentum I have to find the velocity. So v is equal to, we already got this thing, cos, right? 1 cos omega t plus delta, right? That is a omega. A omega is what? A is 0.5 and omega is 2. So 1 cos omega t plus delta. So v is equal to 1 cos omega t plus delta. And then you put the value cos. So at t is pi by 4. So this is what? 2 pi by 4 plus pi by 2. And this will be what? Pi by 2. So cos pi, that is minus 1. So v is minus 1 meter per second at this time. And then momentum will be what? Momentum will be mv. Mass is given 5. So 5 into minus 1 minus 5 kg meter per second. So this is your answer, 0.5 and minus 5. So your this is 0.5. So this question is not difficult.
Very common question. So even I can say, student, these, this and these two questions are quite common question. This one and this one, not at all difficult, not new questions. Also, we can say. Now let us come to the next question. Later we will discuss about about the difficulty level and all. All right, this question is integer type. Two questions are there from mechanics, integer type question. So let's be carefully. Let us read the question first. For integer type questions, little big it seems. We have to read carefully, understand the questions carefully, and then we have to. So let's go through the question first. All right. So a disk of mass m and radius r is free to rotate about its vertical axis as shown in figure. So this is a disk. It is free to rotate about the vertical axis as you can see. A battery operated motor of negligible mass. So here a battery operated motor means this is very quite important. I will discuss. Okay. A battery operated motor is negligible mass is fixed to the disk at a point on its circumference somewhere on its circumference. Another disk of same mass m and radius r by 2 is fixed to the motor thin shaft. So another disk of same mass m and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft. So this is the thin shaft of the motor. Here it is fixed. This is the circumference. Here there is a motor. Initially, both the disks are at rest. So these two are rest. The motor is switched on so that the smaller disk rotates at a uniform angular speed omega. So motor providing the constant angular speed omega to the smaller disk. As the motor is switched on, so immediately what happened, the smaller disk start rotating with angular speed omega. If the angular speed of the larger disk rotates is omega by n, then value of n you have to find. Well, so see, there is a motor somewhere here on circumference, and this is a shaft on which the small disk is fit, and it is rotating. As the motor is switched on, it is rotating with angular speed omega. See here, there is no even the battery operated. There is no wire of the motor like that. So system is isolated. This is you have to understand. System is isolated, right? So system is isolated, and it is motor operated, battery operated motor means what? The chemical energy is supplying to the system means we cannot conserve energy. But since there is no external system, if I am considering these three things, two disk and one motor, so all within this system, right? So no external force, no external torque acting on the system. Energy is not conserved, but no external torque acting on the system means what? Angular momentum the system is conserved. So that is the pinpoint you have to understand, and then you can do it. Then it's not difficult at all. So if I consider, let this is rotating with omega, even like this. So this will is rotating. Let I'm saying same direction. It would not same direction opposite, but let me say omega dash. And definitely we can apply conservation of angular momentum. Angular. It's what L initial is equal to L final for system. So बच्चों, what will be L initial? L initial is nothing but 0, because when the battery is switched off, it is 0. Now what would be L final? L final is the angular momentum of this disk. I am conserving the angular momentum about the center of this bigger disk. Okay, I can conserve from anywhere. This is something useful to us. So say about this axis, we are conserving the angular momentum. So there is angular momentum, a small disk about their own axis, that is spin angular momentum we can say, and this is what the angular momentum about this axis. So this is moment of momentum. So you know very well how to write the angular momentum of rigid body about some other axis which is not passing through rigid body. That that is let me write this, you know very well.
L is L spin angular momentum plus R cross P. That you know. L about some axis A or C, right? So spin angular momentum and plus R cross P. So that you know very well. So this is for small disk, and bigger disk is nothing but I omega. So let's write nothing big. So L spin will be how much for a smaller disk is final I am writing. So m r square, r is r by 2, so r by 2 square. इसके लिए moment of inertia क्या होता है m r square by 2, so it is 2 omega plus r cross p. r cross p मतलब क्या, ये omega है, omega dash है, तो इसकी velocity क्या होगी, so this will be like that, so it will be v, right, it is v here, and v is equal to what, ये disk की circumference की velocity v is equal to क्या, r omega dash, and then मैं क्या बोल रहा हूँ r cross p. इसकी एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, इसकी एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट, सो आर क्रॉस पी, राइट. So that will be what, let me write this, r and p will be what, m, mb, m into b, right, this thing plus angular momentum of the bigger disk, and this is nothing but mr square by 2 into omega dash. So let me write all these things. So this is what, m r square by 4 8 omega plus r m v is equal to omega v is equal to omega r, so omega dash r plus m r square by 2 omega dash, so let me rewrite m r square by 8 omega plus m r square plus m r square 3 by 2 m r square omega dash is equal to 0. So drop here mr square, so it will be omega 3 by 2 omega dash is equal to omega by 8 minus sign. So definitely it should be minus, it will be 4. So omega dash is equal to minus omega by 12. So omega dash, just the angular velocity of the bigger disk will be opposite to the angular velocity of a small disk. That is quite obvious, and it is what, omega by 12. So the value of n is equal to what? Right. So this is, if you got the questions, you can do easily, you know. Not difficult questions. This is integer type questions. You can do in quite a less time. But in good practice, you can do, because you have solved many difficult questions compared to that. All right, students. Let's come to the next question of mechanics, question number 13. And again, this question is from rotation, we can say. Let me read this question and let's do. A thin uniform rod of length L and a certain mass is kept on a frictionless horizontal table with a massless string of length L fixed to one end. Top view. तो ये भी horizontal surface दिया हुआ है, frictionless है, and ये thin rod है, इसकी length L है, और यहाँ पे string है, इसकी भी length L है, और ये smooth surface पे रखा है, ठीक है. The other end of the string is pivoted at point O. यहाँ पे string बंधा है, fix है. ये पे horizontal impulse P is imparted to the rod at distance x is equal to L by n from the midpoint of the rod. ये midpoint से ये distance पे एक impulse लगना, आप देख रहे हैं. Then the rod and the string relative from the midpoint of the rod. Then the rod and the string revolve together around the point O. About O, it is start revolving with the rod remaining aligned. Means rod is always aligned with the string, right? In such a case, the value of n is, with the rod remaining aligned with the string. In such a case, so when the rod is remaining aligned with the string, so what is the value of n? This n. Let's do this question. So right, and you have gone through many questions of impulse momentum. I will tell you that, you know, this is the impulse P is acting. One. So this is the midpoint. Say C, let me write, and this is the impulse acting here. Write P, and this distance is given x.
All right, this is L by 4. So let me write the impulse momentum theorem. This question is not at all difficult. Impulse momentum theorem. You know that initial momentum plus impulse is equal to final momentum. And you know very well impulse momentum theory is applicable for a body of a system, right? So what we can write for the rod, this is a string, right? This is rod. This one is rod. For the rod, what can I write? Initial momentum is 0, impulse is P, and this final momentum is, let me write mv. So velocity of center of mass of the rod is what? Just after collision will be what? All right. So P is equal to mv is equation number 1. Then let's write angular impulse, angular momentum theorem. This is also quite useful. So that is what? L initial plus R cross J is equal to L final. All right. So there is no angular momentum initially. So let me write 0, and R cross J is nothing but X P. This is X and this is P. X P about center of mass of the rod. What is the moment of momentum? Moment of momentum is moment of impulse is what? X P. And then is equal to what? L final. L final will be what? ML square by 12. So now it is quite simple. I got omega is equal to 12 xp by ml square. All right. Now how we will do? See, you got V, you got omega of the rod. Now what it is saying that always the rod is aligned with the spring. So see, after some time the rod is something like that. Right. So this is the rod. Now see, say this angle turned theta. The string turned an angle theta. अच्छा बताओ मुझे, यदि रॉड घूमता नहीं तो रॉड क्या होता? पहले रॉड ऐसा था, इसकी वेलोसिटी भी है। जब ये एंगल थीटा पे आता तब इसकी स्पीड क्या होती? तब भी होती थी। घूमता नहीं तो क्या होता? घूमता नहीं बच्चों तो ये ऐसा रहता। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग लगा, बट घूमता नहीं तो कैसा होता? ऐसा रहता। सेम वेलोसिटी भी रहती है इसकी, क्योंकि मोमेंटम चेंज होती नहीं, क्योंकि और एक टक्कर के बाद, एक इम्पल्स के बाद और कोई फोर्सेस या कोई इम्पल्स नहीं लगा। मगर हुआ क्या? यदि स्ट्रिंग ने एंगल थीटा टर्न किया उतना ही समय में यूनिफॉर्मली, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है इसका, एक बार जो ओमेगा मिल गया वो चेंज नहीं हो रहा, ये रॉड भी सेम एंगल थीटा टर्न किया। यस और नो? बट इज आल्सो टर्न द सेम एंगल, तब तो अलाइन हुआ। इट मींस व्हाट? कि थीटा बाय टी फॉर द स्ट्रिंग is same the theta by t for the rod. Means omega of the string is equal to omega of the rod. Yes or no? And what is the omega of the string? Omega of the string is what? This is V, right? So what is the omega of a string? Omega of a string is this V upon this R, this distance. So this is what? V upon L by 2 plus L. L by 2 plus L. That is 3L by 2. 2V by 3. And what is the omega we got for the rod? Omega for rod we got this 12x. So these two omega for rod must be equal to omega of string, and then 12xp तो ही तो align होगा, is equal to क्या? 2v by 3l, right? So अच्छा 2v, right? So मैंने यहाँ पे p is equal to, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप v की वैल्यू p by m पुट कर सकते हैं, राइट? 2 by 3l p by m is equal to 12x p by mls. m is cut out, 1 l से l कट हो गया, p से p कट हो गया, 2 से 6 हो गया, तो 6 into 3 18, x is equal to l, so x is equal to l by 18. x क्या लिखा था, क्या निकालना था? l by n. So what we got? n is equal to 8. So well students, हमने ये 5 क्वेश्चंस मैकेनिक्स के किए।
केयरफुली हमने किया। ऑब्वियसली हमने एक्सप्लेन किया, इट टेक्स लिटिल मोर टाइम, बट आप जब करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, वन बाय वन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपका जो है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूनिट डायमेंशन। इसमें कुछ भी नई बातें नहीं है, कुछ भी नया। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए हैं, और बच्चे यही एडवांस तक जो बच्चे करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है उनकी। मैं बताऊं आपको, यूनिट डायमेंशन हर बच्चे के होते हैं, और इसमें कुछ भी नई बात नहीं है करने को। सिर्फ आपको टाइम की बात है। आप सही टाइम पे सबकी डायमेंशन लिख लीजिए, और सबके पावर को इक्वेट करना है, और इसे सॉल्व करने की फाइनल आंसर मत निकालिए, मैच कराइए क्या मैच हो रहा है। पूरा टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट। यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो नो डाउट आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। और स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट की बात है, प्रैक्टिस की बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। तो मैकेनिकल क्वेश्चन ये आराम से आप कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा इजी है, टाइम कंज्यूमिंग। इजी एंड टाइम कंज्यूमिंग, राइट। टाइम कंज्यूमिंग मतलब यदि आपकी प्रैक्टिस है तो मैं कम कम समय में कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कुछ भी नई बातें नहीं है। आप एसएचएम किए हैं, आप इक्विलिब्रियम आपको मालूम है, आपने वहां से डिस्प्लेस किया, और आपको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है उसके डायरेक्शन देखिए अपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं? हाँ, लग रहा है। जब हमने वो रीस्टोरिंग फोर्स निकाल लिया, एमए करके हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, मैं बता दूं ये थीटा के टर्म में नहीं हो रहा, ये क्या एक्स के टर्म में हमने निकाला, ठीक है। अब तो राइट, सो दिस विल बी व्हाट, हमने d2x बाय लीनियर एसएचएम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके अबाउट ये सब सिलेक्ट करेगा, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पे एक छोटी सी बात थी कि ये आर और एक्स को रिलेट करना था, तो हमने कैसे रिलेट कर लिया? टू थीटा से टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टू थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एक्स। ये रिलेट कर लिया, और डी टू एक्स को एक्स में रिलेट करके। तो दिस इज अगेन आई कैन से कि कॉमन क्वेश्चन है, कुछ ऐसी मतलब नई बातें नहीं है कि अरे ये एडवांस क्वेश्चन था, बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आया था, नहीं। मतलब कॉमन क्वेश्चंस, आप ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे, क्या आराम से कर सकते हैं। कुछ इसमें कुछ अमेजिंग ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चंस भी मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, और आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस किए होते हैं एसएचएम के, जो कि जिसकी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, और वो करना भी चाहिए। और यदि आप वो किए हैं तो फिर ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बन जाता है। और हाँ, यदि आप जल्दी में कोई बच्चा ऐसे कैनेमैटिक्स से स्टार्ट करना शुरू कर दे कि हाँ एफ इज इक्वल टू एम ए और बी डीवी बाई डी एक्स और डीवी बाई डी टी, देन आप एसएचएम के इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे। यू शुड नॉट डू, यू शुड बी केयरफुल। एंड देन एसएचएम आपको पता है, और आपने, तो फिर इस क्वेश्चन को थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। यस, आपकी एसएचएम की जो लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट लेवल्स ऑफ क्वेश्चन आप किए होते हैं बच्चे जी एडवांस के, उसके कंपेयर में आसान है, इजी है, नॉट डिफिकल्ट। और आइए, इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा मॉडरेट कहूंगा, नॉट हार्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि इसमें आपको ये समझना है कि क्या कंजर्व क्या होगा। जब तक फिजिक्स की कोई प्रिंसिपल नहीं लगाइएगा तो क्वेश्चन तो होगा नहीं। एनर्जी ट्राई कर देगा बच्चा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है नहीं। एनर्जी तो केमिकल एनर्जी, बैटरी की, वो उससे सिस्टम चल रहा है। तो इसमें कंजर्व क्या है, क्योंकि हमें यही समझ में आ गया कि हाँ भाई बैटरी ऑपरेटेड है, बाहर से कोई वायरिंग वगैरह नहीं है मोटर में। तो हम ये सिस्टम जो तीन ऑब्जेक्ट से बना है, बैटरी और दो डिस्क से, इस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो की मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम पे। और इससे हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया तो फिर तो चीजें बहुत आसान हो गई। एक का ओमेगा दिया, दूसरा का ओमेगा डैश हमें मान लेना और वही निकालना है। और हम एंगुलर मोमेंटम जानते हैं कि जिस बॉडी का किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट, इज नॉट बिग टास्क। बहुत सारे क्वेश्चंस आप किए होते हैं एंगुलर मोमेंटम का, जब जब जहां की एंगुलर मोमेंटम किसी और एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस बॉडी से पास नहीं करती है, उसके अबाउट निकालना होता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन किए होते हैं, तो नॉट एट ऑल डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन। हाँ, बट यस, ये सोचना कि क्या कंजर्व करना है, क्या अप्लाई करना है, तो मैं मॉडरेट कर सकता हूँ कि यस दिस इज ए मॉडरेट। एंड देन
ये वाले क्वेश्चन तो आप इम्पल्स मोमेंटम में बड़े बड़े क्वेश्चंस किए होते हैं, जेई एडवांस तक आते आते हर क्लासेस में, हर कोचिंग में, हर स्टडी मटेरियल्स में आपके बहुत सारे, इससे तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे आप, ऐसे टक्कर हुआ बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें कि आप एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, इम्पल्स मोमेंटम लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी लगाते हैं। ये सवाल में तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बस एक ही बात आपको समझना है कि वो हमेशा कैसे अलाइन हो रहा है। तो रॉड भी घूम रहा है और स्ट्रिंग भी घूम रहा है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाया और हमने एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाया, कुछ भी नई नहीं है, बहुत सी कॉमन सी बातें हैं। मगर इसमें जो अच्छी बात है ये है कि जितना एंगल स्ट्रिंग टर्न किया उतना एंगल रॉड भी टर्न किया, और हम समझते हैं कि ये बातें ये बच्चे को बहुत ही आसानी से एग्जाम हॉल में स्ट्राइक हो जानी चाहिए, हो जाएगी, क्योंकि जितने आप सवाल किए होते हैं कि ये आप कर सकते हैं। तो बच्चों, काफी अच्छा वेटेज 24 मैकेनिक्स का, ऑलमोस्ट 30% का। और क्वेश्चंस मैं तो बिल्कुल इसको एवरेज टू मॉडरेट कह रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट कह रहा हूँ। एवरेज क्वेश्चन, एवरेज टफनेस कह सकते हैं आप। ऑलमोस्ट 100% मैकेनिक्स में स्कोर कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक अच्छी प्रैक्टिस है तो। आपके कुछ भी इसमें डाउट है, एनीथिंग इफ यू वांट टू डिस्कस टू मी, please you can contact to me. I will discuss you in bit detail. Thank you for watching my lecture.